कैट 2022 के रिजल्ट्स आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और आपको अगर ये लग रहा है कि आप कैट के बेसिस पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे अपनी चॉइस के कॉलेज में, देन डोंट बी सैड, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको ऐसे एमबीए कॉलेजेस के बारे में जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं और जहां पर आप बिना कैट एग्जाम दिए या फिर अगर आप कैट एग्जाम में कम मार्क्स लाए हैं तो उसके बिना भी एडमिशन पा सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर का, बेटर नोन एज XLRI. It ranks 8 as per NIRF in top MBA colleges in India. It has recorded 100% placements in the year 2022 with an average package of rupees 30.73 lakh per annum and a highest package that stood at rupees 60 lakh per annum. An XLRI MBA costs you anything between 13 lakh till around 25 lakh depending upon the course you select. ZAT cutoff in the year 2022 was 93 percentile for males and 90 percentile for female applicants. The overall cutoff for MBA in Human Resource Management was around 90 percentile for male and 87 percentile for female applicants. On shiksha.com, students have rated this college with a rating of 4.6 stars out of a total 5. On second spot is Narsi Monji Institute of Management Studies. It is one of the best MBA universities in India. It offers MBA in pharmaceutical management, capital market, banking, human resources, and so on. To get an admission into NMIMS, applicants can also take the NMAT exam. This institute is at the 25th spot in the NIRF rank for management colleges in the year 2022. MBA from NMIMS will cost you between rupees 6 lakh to rupees 24 lakh for 2 years depending upon the course you select. More than 180 companies visited the campus for placements. Average package for the MBA core program here was around rupees 23 lakh per annum and MBA HR program witnessed an average package of rupees 19 lakh per annum. The highest package for the MBA core program was around rupees 57 lakh per annum and the highest package for MBA HR program was around rupees 29 lakh per annum. The NMAT cutoff is around 212 marks out of a total 360. On shiksha.com, students have given this college a rating of 4.1 stars. Number 3 is Symbiosis International University. Symbiosis International University has 11 schools spread over Pune, Bengaluru, Nashik, Hyderabad and Noida. These schools offer MBAs in marketing, human resources, finance and operations. Symbiosis में admission के लिए an applicant can also appear for SNAP exam. सिम्बियोसिस से MBA करने के लिए आपको टोटल ट्यूशन फीस देनी पड़ सकती है इन द रेंज ऑफ रुपीज 15.9 लाख टिल अराउंड रुपीज 22 लाख for the complete 2-year course. According to Symbiosis, the average placement package was around rupees 23 lakh per annum. The median here was around rupees 20 lakh per annum and the highest package was around rupees 45.5 lakh per annum in the year 2022. अगर आप सिम्बियोसिस पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्नैप में आपको एटलीस्ट 90 परसेंटाइल लाना होगा। NIRF रैंकिंग 2022 में ये यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर 32nd स्पॉट पर है। shiksha.com पर स्टूडेंट्स ने इस इंस्टीट्यूट को दिए हैं ओवरऑल 4.4 स्टार्स। The institute on the number 4th spot is MICA Ahmedabad, यानी कि मुद्रा Institute of Communication. This offers PGDM in Communication, Fellow Program in Management Communications and numerous other post-certificate programs. NIRF ranking 2022 में MICA को मिली है 42nd rank. According to MICA, they had successfully placed 100% of the batch this year. More than 70 companies participated in the recruitment process. 2022 में the highest package offered here was of rupees 57.51 lakh per annum and the average was around rupees 19 lakh per annum. MICA की फीस रेंज करती है 21 lakh for MBA of 2 years. माइका में एडमिशन लेने के लिए आप कैट एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप जैट एग्जाम भी दे सकते हैं एंड देन फिर आपको माई कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जैट की कट ऑफ यहां पर 80 परसेंटाइल तक जाती है। shiksha.com पर स्टूडेंट्स ने इस इंस्टीट्यूट को दिए हैं 4.4 स्टार्स। तो ये थे वो टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया जहां पर अगर आप कैट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ले पाए हैं तो आप दूसरा एग्जाम देकर और उसमें अच्छा स्कोर करके एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए एक फाइनल स्कोर कार्ड देख लेते हैं और देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखें देन XLRI इज द बेस्ट कॉलेज।
with MICA being the least affordable. Placement के मामले में also XLRI scores well. It has secured the first ranking among these colleges. MICA is at the 4th spot. Third rank is taken by NMIMS. In terms of difficulty level to get admission in these colleges, the most difficult is XLRI. Second spot goes to MICA. Third spot goes to NMIMS. And the college on fourth spot is Symbiosis International University. While if we take a look at the credibility of these colleges in terms of NIRF rankings, then XLRI is the best among the lot. NMIMS is the second best college. On third rank is Symbiosis. On fourth is MICA. And similar results are also being given by ratings given by students on shiksha.com for these colleges. तो ये थे इंडिया के वो कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जहां पर आप कैट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म न करने के बावजूद अपने एमबीए के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करना भी उतना आसान नहीं है। इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।